गुड आफ्टरनून जो कनेक्टेड है यार फटाफट आफ्टरनून सर। यस आफ्टरनून फटाफट दोज ऑफ कनेक्टेड फ्रॉम यूट्यूब सर ऑडियो वीडियो इज क्लियर से गुड कनेक्टेड है आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून प्लीज बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है द ऑडियो वीडियो इज क्लियर जस्ट राइट क्लियर यस सर, ऑडिबल ऑडिबल। गुड आफ्टरनून सर। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून एकदम क्लियर मधुर आवाज आ रही है मेरी कोई कह रहा है सर मधुर आवाज आ रही है ठीक है इफ द ऑडियो वीडियो इज क्लियर प्लीज राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स द पीपल दोज आर कनेक्टेड फ्रॉम यूट्यूब please write clear in the chat box the people who are connected from a zoom please write clear in the chat box please okay जो छुप के बैठे हैं उनको भगवान देख रहे हैं ऊपर से तो आपको रिक्वेस्ट है फटाफट वीडियोस ऑन कर लीजिए जो जूम से कनेक्टेड है सो दैट वी कैन कीप दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव और जिसका वीडियो आखिरी तक ऑन रहेगा उसको एक स्पेशल सरप्राइज मिलेगा बस याद दिला देना मुझे एंड में कि सर क्या गिफ्ट देने वाले थे हमको ठीक है जिसका वीडियो आखिरी तक ऑन रहेगा उसके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है got it yes फटाफट बता दीजिए वीडियो क्लियर है सबको लिखना है यार फिर बाद में क्या होता है कि सेशन चालू हो जाता है फ्यू पीपल सर आवाज ही नहीं आई राइट कोई बात नहीं राइट आपने शायद कनेक्ट नहीं किया होगा अच्छे से इस वजह से भी हो सकता है तो जस्ट वांटेड टू हैव अ क्लैरिटी की आवाज आ रही है कि नहीं सिंस वी आर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स यार हमें मिलना है उन पैसे वाले लोगों से राइट इन्वेस्टमेंट बैंकर का नाम आया तो पैसा ना जुड़े तो मजा ना आए यार इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑलवेज कम्स विथ मनी investment bankers always come with money okay perfectly fine great really happy to see this a lot of people can hear me out फटाफट अपने दोस्त भाइयों तक भी लिंक पहुंचा दो यार बहुत इंटेंस सेशन होगा 1 आवर में इतना कोशिश करेंगे कि पूरा सिखा दें आपको पूरा तो नहीं सिखा पाएंगे बट यस विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग वेयर टू अप्लाई हाउ टू अप्लाई वेयर टू गो व्हाई आईबी राइट व्हाई इक्विटी रिसर्च व्हाई lot of places where you want to get into related to this domain right got it before we start the session just wanted to know that how many of you feel that investment banking is a cool job if you feel it is a cool job just write cool in a chat box please अगर आपको लगता है कि cool है तो just write cool in a chat box if you feel like it's a cool job just write cool in a chat box okay few people are saying that it's a cool job okay ठीक है गॉट इट सर गॉट इट ऐसा ही पैसा होगा बिडू अच्छा कोई कह रहा है पैसे है तो इसलिए अच्छा है बिकॉज ऑफ मनी ओके गॉट इट यस गॉट इट सर ठीक है मोस्ट ऑफ यू फील लाइक इट्स अ कूल जॉब नाउ बिफोर आई स्टार्ट द सेशन ठीक है आई विल बी टेलिंग यू लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वी आर गोना बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन आउट तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कैरी पेन एंड पेपर लेके आ जाओ फटाफट पेन एंड पेपर उठा लो बिकॉज लॉट ऑफ डिस्कशन विल बी there which is related to the subject है ना तो थोड़ा सा टेक्निकल जाएगा सेशन ठीक है इट्स कंप्लीटली फाइन बट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कैरी द पेन एंड पेपर कुछ लोग दिख रहे हैं जो जूम से वीडियो ऑन किए पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं बेचारे यस एकदम बट जो नहीं लेके बैठे हैं प्लीज लेके आ जाओ यस और जो छुप के बैठे हैं उनको भगवान माफ नहीं कर रहे हैं आप वीडियोस ऑन कर लीजिए फटाफट गॉट इट सर ग्रेट नाउ बिफोर वी स्टार्ट इन मेनी पीपल हैव अ conceived notion and many people feel like sir IB का हवा तो बहुत created है in the market, right? And every people talk about investment banking. Every people talk about I wanted to get in IB. I want to get into equity research. I want to get into valuation. I want to get into fund hedging. I want to get into somewhat treasury. I want to get into some large corporate banks, and I want to get into the PE. I want to get into AMCs. Oh my God, sir, ये सब क्या बोल रहे हो, right? This few famous jargon words which every day few people hear it out and after that they're hearing this out they're like ठीक है कुछ होता होगा बड़े लोग करते होंगे right I don't know much about this so we'll try to cover most of the things which is going to be helping you out in this session I'll keep the session very interactive so requesting most of the participation which is there Zoom वाली जनता chat box का पूरा use करे and also the people those are connected from YouTube request you to please write and participate in chat box please got it Now let's start the session with very basic term. Let's start the session. Session पूरा flow में रहेगा बीच से छूट जाएगा तो starting से देखना पड़ेगा because we cannot break the flow. So we'll start with very basic. I might also present my screen. Better I should present my screen so that which is going to be helping you out to understand in a better manner. Okay, got it. Just let me know whether my screen is visible or not to you guys. Whether my screen is visible. If it is visible, show thumbs up in the chat box, please. Okay, I'll rename this also for later date.
maybe. Okay, got it. ठीक है. Now, perfectly fine. First question, sir. What is investment banking? होता क्या है पहले तो ये बताओ. Anyone has any idea can write it over a chat box or can raise their hand so that I can unmute them. Anyone in the house. Anyone in the house. Yes. किसी को बताना चाहते हैं? Yes. Apurva is there. Yes, Apurva. What is investment banking? Hello, sir. So Hello. investment banking is like a mediocre between the commercial clients and the investors or something like. जो एक medi तारक मेहता जी आ गए बीच में, कोई बात नहीं. Okay, got it. अजी किसका तारक मेहता चल रहा है? अच्छा, someone else is there. Okay. राबी Okay, so कुमार. मेरा Okay. नहीं था. Yes, okay. It's a It's mediator like a between. mediator between the investors and the persons who are want to like sell or like purchase anything. It's like between the clients and the investors. For example, one wants to invest their money and someone wants to sell their product or sell their kind of divisions. So they Okay. will meet at a point. That point will be the investment banker who will act as a mediator between both the parties. And the Got it. second work will be like fundraising. If you want to raise a fund, whether it will be a debt, IPOs, further public offers, then they will help to raise that money for you. And third Got one it. is for the valuation purpose. If you want to merger or you want to acquire, then you have to value the company, whether it will be a private entity or it will be a listed entity for the perfect valuation which you want to pay for that company. Got it. Got it. Perfectly fine. Great. I think काफी अपने detailed definition cover कर लिया है. Few people like इसको कैसे इतना पता है? Don't worry. Right. So that is there. Okay. Now others can put their thoughts in the chat box. If you feel like I'm going fast, you can just write fast in the chat box. Someone is saying investment banker acts as a facilitator between buyer and seller together. Got it. Perfectly fine. ठीक है. So before I go into the definition, I'll be taking one basic example, which is going to be acting as a base to understand that what IB is all about. फिर वहां से I'll pick up the discussion to the next level. ठीक है? Now, assuming that there are two parties, है ना? Assuming that there are two parties, one party is CA Monk, okay? One party is CA Monk, and another party which is you. ठीक है? अपने आप को assume कर लो. Okay, imagine that you are one of the person. Now, ask your mom and dad after this session that how much money we have. Your dad will say, Dad, we have 100 crore rupees. Imagine. Please do not ask your mom and dad. Just assume that you have 100 damn crore rupees. आपके पास 100 crore रुपए पड़े हुए हैं, which your mom and dad has told you out. And there is one party which is called as a CA Monk. CA Monk wants to raise some funds. CA Monks wants some money for growth, expansion, and ensure that its business is going to be reaching and doing wonders in their life, and we wanted to become unicorn and all this. So CA Monk wants to raise the money, right? Now, there are multiple ways to raise the money. Either it can raise the money through equity, or it can raise through debt, or it can be combination of equity plus debt, or it can be some of the preference shares. All those things, the options are available with the CA Monk, right? Second thing, where you as a person wants to invest your 100 damn crore rupees, right? You as a person wants to invest your 100 damn crore rupees. Now, whether you will invest in FD, how many of you will invest? Now, imagine that you have 100 odd crore rupees. How many of you will invest in FD, please? How many of you will invest in a fixed deposit? If you will invest, just write yes in the chat box. If you will invest, just write yes in the chat box. If you will not invest, just write no in the chat box. If you will not invest, just write no in the chat box. Okay. Most of you saying, sir, मैं तो invest नहीं करूँगा. Okay, right? You will want some of the exceptional return. You wanted to earn some supernormal profits. You wanted to have and ensure that कि मैं ये पैसे से कुछ अच्छा पैसा कमा पाऊँ, right? So what you will do, you will find some of the good investment opportunities. You'll find some good investment opportunities, right? And you're ready to do what? You're ready to buy something. ऐसा कुछ खरीदो जिससे मजा आ जाए, पैसा 4 का 10 20 हो जाए, यार मजा आ जाना चाहिए. So what you're doing is that you are sitting on which side? You're sitting on buy side. आप कुछ खरीदना चाहते हो. And the person, those who is willing to sell and wanted to raise the money, say for example, CA Monk is ready to issue its equity share and wanted to get the money in a business. We are sitting on a sell side. These are the two important terms which you are going to be interacting and listening in investment banking again and again and again and again. Buy side and sell side. ऐसा व्यक्ति जो बेचने के लिए
तैयार बैठा हुआ है, that is sitting on a sell side, ऐसा व्यक्ति जो खरीदने के लिए बैठा हुआ है is on a buy side. Now, for you guys, it's very difficult to find the people out where you can invest, right? And it's very difficult to find out right people out, and that is why you go to one of the intermediaries or multiple intermediaries, by which we call as there are a lot of investment bankers. Okay, lot of investment bankers who will help this person on a buy side to connect the person on a sell side. Okay, so that if you want to invest 100 odd crore rupees, I'll give you an idea to invest in a SAMBHAV. If you can give me multiple ideas to invest on multiple companies. That means what I'm saying is that the investment banker, I'm referring again, the investment banker is nothing but what? Investment bankers are financial intermediaries. Investment bankers are financial intermediaries. Those who are gonna be helping, those who is gonna be helping. This IB firms are gonna be helping whom? Are gonna be helping, very important, large corporates, governments, or some of the HNI clients to do what? To manage money effectively, ताकि मैं उसका पैसा सही जगह पहुंचा पाऊं. That is what the aim at the goal of an investment banker, one of the goal of an investment banker, right? Now, to manage the money, the management of money can be done by connecting. What I'm trying to do, by connecting to manage the money, what I'll do, I'll connect them with money purchasing investors. मैं क्या था? मैं एक intermediary था. I was an intermediary. I was a Zariya. Those who will help to connect between CMONC and this. Okay. So investment banker is an intermediary who's gonna be helping to connect to whom? To the large corporates, governments, and HNI, and to invest their money, right, in a right direction. And investments can be at a lot of places. It can be FPOs, it can be IPOs, it can be bond market, it can be debt market, it can be any sort of things. Sir, got it, sir. मतलब in short, investment banker मदद करेगा कि भाई जो भी on a buy side है उसको to invest the money properly, on a sell side to get the money properly. Simple. Now, why do you know that in IB firm, many people feel the IB firm is a cool job? You know why? One of the good reasons why IB people are one of the good thing about the investment banking firm is that, you know what? In investment banking, you get a commission based on whatever the deal has been there. Okay, you get a commission based on whatever deal has been done. So say for example, if it is a equity deal, you might get a commission up to 2 to 5 odd percentage, depending on type of clients, depending on type of investing which are going. Anyone aware of what was the size of LIC IPO? Anyone aware of what was the size of LIP IPO? Please in the chat box, can you please put me your numbers? Anyone aware of what was the size of LIC IPO? Anyone was aware कि कितना बड़ा LIC का IPO size था? I want to see the numbers. How can two people tell different odd numbers? Okay, it was somewhere around 21,000 damn crore. Okay, now imagine I am an investment banker for the same. I'll take 2% of the 21,000 crore if I am being a part of the same. Can anyone good at numbers can help me out? What is a 2% of 21 damn at crores rupees? It amounts to 420 odd crores. If it is a dead deal, okay, there are a lot of time, I think people must have been reading around
कि lot of government contracts or road contracts which are going to be there, and for that lot of company borrow the money from a banks. Okay, and for that they take a debt. Okay, now if I also want to ensure that if I'm bringing a debt to my client, the range of or the commission which the IB firms mostly going to be charging, it might vary. It might be from 0.25 to 1 or 2%. तो अगर 10,000 करोड़ का आपने लोन पास करवा के दिया है for the big corporates, it's like bang on. Sir, but this brings me to a confusion. Many people get confused between the commercial bank versus investment bank. Okay, कमर्शियल बैंक कौन सी हो गई? जो आपकी आईसीआईसीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट? ये सब जो आपकी छोटी मोटी बैंक्स है, राइट? दिस आर दी कमर्शियल बैंक्स जहां पे इट्स गोना बी डीलिंग इन अ स्मॉलर वॉल्यूम्स. बट द आईबी फर्म्स, व्हेन इट कम्स टू द आईबी फर्म्स, राइट, दिस आर द बैंक्स व्हिच आर गोना बी many of the IB firms like JP Morgan, Goldman Sachs, इनका तो ऐसा रहता है कि हम लोग 200 करोड़ के नीचे की चीजें देखेंगे ही नहीं. Imagine. So this is what the level is. What I mean to say is that the commercial banks can also be a customer, or IB firm can be serving the commercial banks as well. जैसे ICICI बैंक जो JP Morgan है उसका क्लाइंट हो सकता है ICICI बैंक. समझ रहे हो? So that is what a case may be. Okay, now moving forward, investment banking का तो सर थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया, buy side, sell side, which is there. Sir, but why it is important for me to know all this? The reason is quite simple, because since you are looking a job into this lucrative domain, it's a niche profile. Okay, because here you're not only going to be competing with CAs in the market, guys, please do understand. You're going to be competing with the MBAs, you're going to be competing with CFAs, you're going to be competing with some of the engineers in the house. Okay, and that is why this comes with a lot of skills, a lot of requirements which people are going to be talking every damn day. Okay, first thing. Second thing which I wanted to understand and ask every one of you is that since every one of you have studied CA final, I hope everyone has studied CA final, the topics which you have studied in the part of a SFM, every topic in a SFM can be a job work or job role for you guys. Just giving an example, if you have studied a valuation in CA final, that means you can move to the IB side or PE side. Okay, if you've done a somewhere related to forex and derivatives, you can be a part of fund management, you can be part of hedge fund, you can be part of a treasury. Okay, but every topic in a SFM is a separate line of area of interest or a job which is there. But the issue is, if you want to get into this, you need to know what are the things, what are the procedures, what are the skill sets, how to approach, whom to approach. And at the end of the session, I will give you a small surprise. And that is, I'll give you a list of IB companies जो आपको second time में दिख रही है, approximately 200 list of IB companies with their career portal links. आपको बस click करना है और apply करना है. That's it. Okay, now moving to the next part. I've explained you this buy side and sell side, right? Now, continuing this example so that you can understand in a better manner. Since imagine that you want to invest money in CMONG and the investment banking firm is assuming that O3 Capital or JP Morgan, let me take JP Morgan. JP Morgan is a well-known name. JP Morgan. Okay, the investment banker was JP Morgan, where you went to JP Morgan to say that, okay, I'm looking for good investment opportunity. So JP Morgan said that, yes, definitely we'll help you out if we find some of the good investment opportunity. And CMONG was looking to raise 50 odd crore rupees. Okay, and CMONG also went to JP Morgan to saying that, okay, can you please help us to invest or find out some of the people those are looking for investments. Okay, now coming back to this. Now, since you are having 100 odd crore, you decided to invest 50 crores into CMONG. Remaining are the 50 odd crores which are there. Okay. Now, you can invest this 50 odd crores into multiple opportunities which your investment banking firm might tell you out. Okay. And sir, what are the areas, what are the places where I can invest into? You can either be a part of investing into equities. Okay. You can either a part of investing into debts. You can invest into FPOs. You can invest into IPOs. You can invest into the other places. Okay. Now, so very simple. Since you decided to invest this 50 odd crore rupees in CMONG, the question again comes is that, Shivam, or I'll ask you a simple question. Will you invest this 50 odd crore without looking into the company's financials or without doing some of the checks? कैसे invest कर दोगे कि सर को मैं पहचानता हूं तो मैं दे देता हूं सर को 50 crore. Anyone interested to give 50 odd crores without checking?
Are you interested or no? If you're interested, just write yes. If you're not interested, just write no. I want to have 100% participation, please. I want people from a YouTube. यार आपको लिखना पड़ेगा. आप participate नहीं करोगे तो सेशन ऊपर से चला जाएगा. सर भारी भारी हो रहा है, फिर बोलना मत. Okay. Got it. See, you will not give your money 50 odd crore rupees without checking, and that is why very, very important. Whenever people are going to be investing in any of the companies like CMONG, assuming that CMONG will or have to get it or will have to do its due diligence. Okay. CMONG को अपना due diligence करवाना पड़ेगा, which is again one of the domain or areas where a lot of chartered accountants are nowadays hired. Okay. आपको ड्यू डिलिजेंस करवाना पड़ेगा. एंड हियर अगेन वन ऑफ द डोमेन और जॉब्स वेयर यू आर हायर्ड फॉर इज एफडीडी. बहुत बार आपने सुना होगा एफडीडी में हायरिंग है, एफडीडी में हायरिंग है. What does FDD people are going to be doing? They are going to be checking the financial due diligence. They are going to be checking the financial health. After the FDD is done, they'll tell that कि भाई जो financials है are perfectly made or not, right? They'll check the financial health. And after that is done, once the due diligence is done, they will do a valuation. They will do a valuation of CMONG. They'll say that, okay, CMONG is now valued at $1 billion. Hooray! We are a unicorn. Thank you, right? Now they said that CMONG is valued at $1 billion. After the valuation is done, you people are going to be getting an investment opportunity, or you people are going to be investing on CMONG based on this valuation. Now, many people also don't understand how does valuation principle works. How many of you want to understand the basics of valuation? थोड़ा सा समझा दो सर कि कैसे valuation work होता है. If you want to understand it, just write yes in the chat box. If you know it, I'll just move ahead. अगर आपको समझना है तो बता दो. If you want to understand it, I want 200 yes in the chat box. जिन जिनको समझना है लिख दीजिए. People from YouTube, अगर आप लिखोगे तो ये हम बताएंगे. आप ही हो बस, आप ही के लिए सेशन ले रहे हैं. देखो, very simple, very interesting part about a valuation. Understand this. थोड़ा सा ध्यान से समझना. ठीक है. Year 1. ठीक है. Let me explain you. Please pay 100% attention. ठीक है. There are multiple types of valuation वगैरह techniques और ये सब पे मैं नहीं जा रहा हूँ. I am just keeping the discussion simple so that you understand it. Year 1 company में शिवम पलन introduce a cash to capital. तो entry will be capital to cash. I imagine that I have introduced 1 crore rupees. ठीक है. Imagine मैंने 1 करोड़ रुपए बिजनेस में उतारा. ठीक है. I've invested this money into a lot of fixed assets. है ना. मैंने assuming that 1 crore rupees invested into the fixed assets. ठीक है. After that is done, I have done some of the sales. कुछ मैंने सेल्स किया. मान लो कि मैंने सेल्स किया 2 करोड़ का. 2 करोड़ का मैंने सेल किया with the capital investments and all this expenses and all this out. And my net profit went to, say for example 1 crore rupees. Just assume that my net profit went to 1 crore rupees. Okay. Now, if I see the financials at the end of a year 1, तो मेरा capital will be somewhere around 1 crore plus 1 crore, which is nothing but what reserves. Reserves आ जाएंगे मेरे 1 crore rupees. ठीक है. And आपने कुछ तो भी cash and all this आया या cash in hand आपके पास था, मान लो 1 crore rupees. ठीक है. Simple balance sheet, no rocket science. Now, if you see the company's valuation now at the end of a 1 year, it's not going to be 2 crore rupees. It's going to be more than 2 crore rupees. Why? Because I will say that CMONG is now in a potential to earn a good money based on the future projected cash flow. Hello. CMONG का फ्यूचर में और ज्यादा कैश फ्लो कमा सकता है बिकॉज उसका ब्रांड इमेज बन गया है मार्केट में. स्टूडेंट्स को पता है कि भैया अगर ट्रेनिंग वर्कशॉप लेना है तो CMONG के पास आओ, बिकॉज पीपल नो दिस. अभी ब्रांड इमेज बन गया है, राइट. ऑल्सो वी कैन से दैट the CMONG might be earning in the futures based on brand image, based on all this. And I decided कि ठीक है, the valuation of a company at the end of year 1 year will not be 2 crore rupees. It's going to be definitely going to be more than 2 crore rupees. ठीक है. Imagine that the valuation of CMONG at the end of the first year becomes 4 odd crore rupees based on the future projected cash flow. ठीक है. और उसको मैंने जब डिस्काउंट किया तो it amounts to 4 odd crore rupees. 4 करोड़ रुपए वैल्यूएशन हो गया CMONG का. ठीक है. Now moving again, same thing. फर्स्ट ईयर के एंड में CMONG का वैल्यूएशन था 4 करोड़ रुपीस. इनिशियल कैपिटल इन द बिजनेस वाज 1 करोड़. रिजर्व्स वाज 1 करोड़. ठीक है. आपने कितना पैसा लगाया था? 1 करोड़ रुपए. ठीक है. नाउ द वैल्यूएशन ऑफ 1 करोड़ व्हिच यू हैव इन्वेस्टेड इज नाउ 4 करोड़ रुपीस. नाउ इमेजिन दैट इफ समवन्स लाइक किसको है
someone who wants to invest into CMONK. Sahil decided that he has 100 odd crore rupees. He want to invest 1 crore rupees in a CMONK. He wants to invest 1 crore rupees in a CMONK. I'll ask him to invest at a 4 crore का valuation. ठीक है, I'll ask him to invest at a 4 crore का valuation. ठीक है, तो साहिल ने मान लो 1 crore rupees CMONK में डाला, बट उसके 1 crore डालने से मेरे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बट अगेन अज्यूमिंग दैट इट्स ऑन द सेम वैल्यूएशन, 4 crore में उन्होंने मेरी कंपनी पे पैसा डाला. नाउ माय शेयर विल बी, मेरा शेयर जो बचेगा है ना, जब मैं इसको सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी जो इक्विटी इशू करूंगा, राइट, व्हिच इज देयर. सो इस वजह से मेरा जो शेयर रहेगा अर्लियर वाज 4 crore rupees, साहिल हैज इंट्रोड्यूस 1 crore rupees. ठीक है, तो माय शेयर विल बी 4/5, हिज शेयर विल बी 1/5. ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी का देखो वैल्यूएशन बढ़ गया. ठीक है, मैंने कितना उतारा था? इफ यू कैन एनीवन प्लीज हेल्प मी आउट टू कैलकुलेट दिस. आई इंट्रोड्यूस 1 crore rupees. नाउ दिस 1 crore हैज बिकम 4/5. 4/5. एनीवन कैन हेल्प मी आउट विद द नंबर्स? कितना हो गया? कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट व्हाट इज 4/5? कितना होता है एक बार बताओ. देन आई विल टेक द 4 crore का दिस into 4 crore. Anyone, what is 4/5? 80%, right? तो 80% of 4 crore कितना होगा? 80% of 4 crore, 80% of 4 crore please, 3.2. ठीक है, तो CMONK का जो मेरा शेयर था, जो मैंने 1 crore डाला था, वो अभी 3.2 crore हो गया, बिकॉज वैल्यूएशन कंपनी का बढ़ गया. 4 crore था वैल्यूएशन, तो मेरा पैसा है 3.2 crore और साहिल का पैसा है 1/5, which is 0.8 crore. भले उसने 1 crore डाला था, बट उसका पैसा कम माना जाएगा बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द वैल्यूएशन गेम. ठीक है, and this is how the valuation works, and that is why you have seen that many people say that a startup is a bubble, right? क्यों? because देखो मैंने डाला तो 1 crore था, बट वो बन गया 3.5 crore अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन. ठीक है, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क्स. अभी मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं किया, आई जस्ट एक्सप्लेन इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर. ठीक है, तो देखो मेरे कहा कि 1 crore 3.5 crore रुपए बढ़ गए बिकॉज हवा में मैंने उसका वैल्यूएशन बढ़ा दिया. नाउ व्हाट आई एम रेफरिंग टू, नाउ सिंस यू आर इन्वेस्टिंग इनटू द माय कंपनी एज अ CMO, I'll go for a valuation, okay, and depending on this valuation, you'll be investing some money in my company. Okay, after you invest this money in my company, you will hold this money for a few time, or you can also keep it for a longer duration, whichever is your choice. And you will also see that कि अगर अच्छा exit opportunities मिल रहा है, like IPOs and some of the opportunities, you will try to exit out of the market. जैसे कि recently Uber ने have sold I think 5.6% stake of Zomato. People reading the news wanted to get into IB, must be reading all this news. ठीक है, so you should be aware of all this news in the market. ठीक है, now सर यहाँ तक के तो मेरे को समझ में आ गया. I hope you are understanding this. I hope the discussion didn't get much technical. ज़्यादा technical नहीं हुआ. How many of you are able to understood this? समझ गया? नहीं समझ में आया? हाँ, CMONK funding कर लो. अच्छा, thank you Vaibhav. How many of you understood this? If you have understood this, just write understood in the chat box. If you've understood this, just write understood in the chat box. Okay, got it. Now, here also comes one more important concept, which is 3 important concept: front office, middle office, back office. Okay, front office, middle office, back office. Okay. Now, the people those who want to get into the front office, these are the people those who are going to be part of a deal. Okay, these are the people those who are going to be part of a deal. मतलब क्या, जो लोग यहाँ पे, जो JP Morgan से एक व्यक्ति आएगा, those who's going to be helping CMONK and going to be helping you to close this deal. This is a guy who's going to be acting as a part of a front office. ठीक है, ये front office वाला व्यक्ति रहेगा. Okay. The middle office is mostly a support function to a front officer. कि suppose say for example, if he needs to prepare the pitch deck, if he wants to prepare some of the documents and all this, the middle office guy is going to be helping the front office guy. And the back office is mainly or more or less going to be responsible for accounting or checking of the compliances, right? Or can be part of product control team. So sorry. Yes, can be a part of product control team, which is there. Now, many people say that, sir, I want to get into front office. Mostly CAs will not be very easily going to be getting a front office in a top companies. The reason is quite simple. If you ask a simple question, आज मैं सभी को एक simple question पूछता हूँ. You need to give me answer in a chat box. If I give you 100 crore rupees, आज मैंने आपको 100 crore रुपए दिया, will you be able to invest this 100 crore rupees?
if I give you 100 odd crore rupees, will you be in a position to invest my 100 odd crore rupees? क्या आप मेरे 100 crore रुपए invest कर सकते हो? By taking all the risk and all this. See, most of you are saying no, not now, right? Because you don't know the investment avenues, you don't know how to see the risk appetite, you don't know how to deal with all those things out. And that is why many of you will not be very easily getting a front office now, especially in the top companies. Okay, you might be offered a middle office or a back office. Okay, now one of the major role which is offered to the chartered accountants is a product control role. What does product controller do? Say for example, the front office guy is going to be doing a lot of investing, or say for example he is doing a lot of trading. Jaise ki you have invested 50 crore in CMO and 50 crore you decided to invest in an equity. You decided to invest 50 crore in equity. You says that कि मैं तो equity share market में invest करवाना चाहूंगा. So what front office guy might do is that they will be investing your money into the equities, and they might go into daily trades, daily options, daily forward contracts. Okay, they need to perform it on a daily basis to ensure that your money is going to be getting an adequate return what you're targeting for. After that is done, the accounting also for the same needs to be done on a real-time basis. Because आप इतने सारे transaction कर रहे हो, if you're not going to be accounting, it's going to be like a scam. Scam हो जाएगा, नहीं तो लग जाएगी भाई. आप कितने transaction center कर रहे हो? And it's a crores of rupees every damn day, right? So इसका accounting भी होना real time में जरूरी है. तो system automatically records this. उनका system बनाया हुआ है कि जैसे entry होगा, system भी इसको record कर लेगा. But we need some person to check this out. जो ने trade enter किया है, क्या वो system में भी correctly record हुआ है कि नहीं? And that is what one of the role of a back office guy. Okay, that is something one of the role of a back office guy. Plus, इसके साथ many a times you need to check that whether the client's risk appetite was low, but you have invested or get into the lot of complex transactions. So whether the compliances are up to the mark as per the agreements which are there or not is again a role of a back office guy, the product controller. Okay, and this is what the role which you are gonna be doing as a part of a back office. Sir, I got this, sir. Sir, but again the question comes is, since I want to get into the equity research, or if I want to get into this side, whether the growth from a back office to the front office is going to be fast, it's purely depending on what type of work you're doing. It purely depending on how you work. It depends on how good you are at some of the skill sets which are there. Because IB may, you should be having few predefined skill sets if you want to grow faster in your career. Because imagine if you're a front officer guy, you are going to be talking in terms of and getting in terms of commissions. आपको percentage में commission भी मिलता है. Okay. Now again a question comes is कि sir ये सब तो ठीक है, front office, back office है ना, काम क्या करना रहेगा वो भी समझ में आ गया. Here again multiple chances are there. Either you can be part of some of the AMCs which are there, asset management companies, or you can be part of some of the equity research houses, or you can be part of only a research team. Right? Multiple roles, multiple avenues are there. You need to read the job description very, 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 very carefully. Right? Very, 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 very carefully. Now, a few important things. Since you are a fresher chartered accountant, generally the chartered accountants in this domain are going to be hired by the name of analyst or associate. Okay? ये दो designation मानी गई है for IB firms. Okay? Nowadays, companies have started giving you something different by the different names out, but just analyst or associate, either it's an equity analyst, research analyst, you know, so that is what is there. The growth is after that is done, you become mostly associate, then you become AVP, then you become VP, then you become director, and then you become executive director. This is what a growth trajectory in IB firms. Okay. Now, यहाँ पे till this stage, you know, it's a 3 years growth in each. 3 साल का generally is a gestation period in each of the roles. Now, here you will be mostly a journalist. That means, what does journalist means? You need to do a research about the domains, multiple areas. It will not be fixed based on the industry or sectors. Okay, it will not be fixed based on industry and sectors. Okay, either you might be doing someday on FMCG, second you'll be working on some pharmaceuticals, third you might be working on different companies out. But after you move to the AVP position, you will be working very specifically and particularly research about one or two domains out, which is there. Got it. Now, sir,
How many of you feel like सर ये सब तो ठीक है, I got this सर, मुझे मजा आ रहा है कि सुन के एनालिस्ट बनना पड़ेगा, I want to do some of the research, I need to ensure that the proper investments are done. But again the question comes is, sir important question बता दो ना कि जाना कैसे है, list of companies दे दो ना, what are the skill sets I need to prepare. How many of you want to listen this? If you want to listen this out, just write yes in the chat box please. How many of you want to listen this out? सर ये सब तो ठीक है, यहाँ तक के तो समझ में आ गया, बट अब पैसे की बात करते हैं ना सर, थोड़ा सा मेन टॉपिक पे आ जाओ कि ये सब तो समझ में आ गया, आईबी में ये रहेगा, फ्रंट ऑफिस मिलेगा नहीं अभी इतनी जल्दी, बैक ऑफिस मिडिल ऑफिस मिल जाएगा, कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज दे दो, कैसे अप्लाई करें वो बता दो, और पैसा दिलवा दो सर फटाफट, तो मजा आ जाएगा सर. ठीक है, ओके ओके सर, आई वाज वेटिंग फॉर द सेम, गॉट इट. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, सो सॉरी, हाँ, कमिंग टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हिच इज डिस्कशन ऑन स्किल सेट्स. थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर आईबी का इंटरव्यू क्रैक करना है, ओके, व्हाट आर द स्किल सेट्स व्हिच आर नीडेड? फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल सेट्स. You should be a person who should have a good quantitative skills. Quantitative numbers से प्यार होना चाहिए. You should be a person who should have a good quantitative skills. First, ठीक है, quantitative skills is something which is very very important. Second, you should be having at least a knowledge of one or two sectors plus one or two industry. ठीक है, why this is important? Because agar if you're a good researcher or if you want to be get into IB firms, they'll ask you, Shivam, I have 100 crore rupees, where you'll invest? You say that, sir, I can invest in a tire industry. Okay, now they'll ask you why only tire industry, or they will ask you, okay, have you read or are you aware of any of the sectors, are you aware of any of the domains, right? This is one of the question which most of the companies will be asking you during the time of interviews. Okay, so you should be aware and at least start reading about the sectors, है ना, कि भाई ये सेक्टर कैसे परफॉर्म करता है, how big is the market size, how big is the मतलब how many people are there, you know, what is the demand, what is the future demand, what is the future of all those industries. It's very 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 important. ठीक है, second thing, skill. Third, you should be having an idea about develop or the developing businesses. कौन सा सेक्टर्स आजकल ग्रो हो रहे हैं, राइट, एंड यू शुड बी एबल टू सी दैट कि भाई कौन सी इंडस्ट्री ग्रूम हो रही है. ठीक है, यू शुड बी हैविंग अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. You should be having a very good communication skills. When most important, you should have a basic knowledge about financial modeling. You should be having a basic knowledge about financial modeling. Very important. बहुत ज्यादा इस पे डिपेंडेंट हो जाता है, बिकॉज मेनी टाइम्स विल बी आस्क्ड कि आपने कभी किसी कंपनी का मॉडल बनाया है क्या, आर यू एबल टू फोरकास्ट इट, हाउ डू यू डू वैल्यूएशन, ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. एंड विद दिस यू विल बी आल्सो वर्किंग ऑन प्रेजेंटेशन. You should know how to make a presentation of the PPTs and all this, again important, because since you are going to a client, आपके पास थोड़ी ऐसे JP Morgan आएगा चलते चलते कि आपके 50 करोड़ मुझे दे दो. They need to present something, right? Why you should invest in CA Monks. JP Morgan will be acting as an agent. भाई अगर डील नहीं हुआ तो JP Morgan की इज्जत भी खराब होगी, राइट? अगर JP Morgan ने आपके 50 करोड़ CA Monks में नहीं लगा पाए तो JP Morgan का थोड़ा सा ब्रांड खराब होगा ना. They need to ensure that the deal is closed. And the time the deal is closed, JP Morgan is going to be getting a money from investor also and sometimes from both the parties. Okay, so it's very very important that if you're going to be part of a front office and all this, you need to be a very good communicator and having a good presentation skills. Okay, so that is something which is there. Now moving to the next part. Sir, ये सब skills तो कैसे acquire करे? This you can start reading out. Okay, that's not a problem. Also reading about the businesses and stuff, please start reading the business news. That is going to be helping you out. Communication skills you can definitely work on by communicating with more and more people out. Presentation, you can just learn how to make PPTs and stuff. Quantitative skills is an inherent. अब तो ये तो अब एकदम से तो नहीं आ सकती, because SFM में या if you're good with numbers out, so that is what is there. Financial modeling के you can do a lot of courses and classes which are there. ठीक है, I also have a financial modeling का class, you can check it out. Description में link लगा हुआ है, और if you want I can show you at the end of a class as well. ठीक है, so this is what a skill set which is I'm talking about. Next, coming to the companies.
ठीक है, कमिंग टू द कंपनीज सर, ये सब तो ठीक था, स्किल सेट मैं एक्वायर कर लूंगा. नाउ कमिंग टू द कंपनीज. नाउ वन इंपॉर्टेंट टिप आई विल टेल यू ऑनेस्टली, if you want to get into the IB firms. In investment banking, one important thing works, and that is I called as a reference. IB में सबसे ज्यादा रेफरेंस काम करता है. Highest number of references works in investment banking firm. Why? Because here you are going to be dealing with money. जैसे कि अगर आपको मैं सिंपल से पूछता हूँ, अगर कभी आपके घर पे कभी कुछ पैसे का काम होता होगा या कभी जहां पे इन्वेस्ट करना होता होगा, तो पापा पूछते भरोसे वाला आदमी है कि नहीं, राइट? तो यू टॉक अबाउट द भरोसा हियर. And that is why it also comes with a bharosa in investment banking as well. Okay, so please you understand that if you are having a very good references, at which level? Again, this is a question. If you have a reference at AVP and above level, it's going to be helping you to get faster call for the interviews. I hope you remember the AVP and above step. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था. How many of you remember this? भूलना नहीं भाई, ऐसा नहीं है. AVP and above के references लेके आओ. It's going to be very very good for you guys to start getting good interview calls. And literally, I can tell you out, people are not connecting with the right candidates, and that is why they are not getting a good job offers. सर बट कौन सी कंपनीज के एचआर को कनेक्ट करे, कौन सी कंपनी के एवीपी को ढूंढे सर? नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा सर. मेरे को तो 2-3 कंपनी बताता है बस. जेपी मॉर्गन सुना है, गोल्डमैन सुना है, O3 कैपिटल सुना है सर, और थोड़ी बहुत बैंक सुनी है, एक्सेस कैपिटल, HDFC, कोटक. उसके आगे तो सर नाम ही नहीं बढ़ रहा है सर. क्या करें? डोंट वरी, आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ IB companies which are there. Oh my God, sir, ये पहले नहीं दिखा सकते थे आप, right? Depending on the domains, depending on the areas where you want to get into, we have tried to collate some of the list, which is the list of investment banking companies, which is related to boutique companies. देख लो भाई, इतनी सारी companies है, ठीक है? If you want to target the consulting and transaction advisory list of companies with their career pages. नेक्स्ट ये भी हो गया. म्यूचुअल फंड हाउसेस जो इस साइड में काम करते हैं विद द लोकेशन. ओके, इक्विटी रिसर्च हाउसेस, KPOs which are there, उसके बारे में दे दिया है. M&A एडवाइजरी साइड which is there, if you can try this out, want to get into this. रियल एस्टेट कंसल्टिंग में जाना है तो यहाँ पे है. मर्चेंट बैंकिंग में जाना है तो ये साइड है. फिक्स्ड इनकम KPOs में जाना है तो दिस आर द लिस्ट ऑफ कंपनीज. माइक्रो फाइनेंस में जाना है तो दिस आर द लिस्ट ऑफ कंपनीज which are there. क्रेडिट ब्यूरोज में जाना है तो ये. PMS में जाना है तो ये. These are the list of companies which are there, which I'll be sharing with you guys, those who are attending the session. Oh my God, sir, यही चीज के लिए तो मैं आया था. Okay, how many of you want this list? How many of you want this? किस किस को चाहिए बताइए. How many of you want this? अच्छा, हैंड रेस कर दिया. अब तो भाई इतनी तेज लिख रहे हैं जैसे बाप रे लॉटरी लग गई. कुछ लोग तो ऐसे लिख रहे हैं जैसे लॉटरी लग गई सर. अच्छा, दे दो. नहीं दूंगा, मैं तो नहीं दूंगा, ठीक है? डोंट वरी, राइट? दे दो, दे दो. ओके, गॉट इट. आई विल गिव यू, डोंट वरी, आई विल टेल यू वेयर यू विल बी एबल टू फाइंड दिस आउट. लॉटरी इज व्हेन द इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स आर देयर. 20 रुपए दूंगा सर. अच्छा ठीक है, 20 रुपए दे दो, ठीक है? गॉट इट. नाउ फर्स्ट थिंग सॉर्टेड, स्किल्स बता दिया मैंने. सेकंड, वेयर टू अप्लाई, लिस्ट शेयर्ड, ठीक है? लिस्ट शेयर्ड. सर कहां मिलेगी ये लिस्ट, कहां मिलेगी ये लिस्ट, राइट? आई विल टेल यू वेयर यू विल एबल टू फाइंड दिस आउट. ये आपको आपके फेवरेट जगह पे मिलेगी. ये आपको आपके फेवरेट जगह पे मिलेगी. जो हमारा एक सपना है, राइट? अभी अपलोड कर दो, तुरंत अपलोडेड, ऑलरेडी अपलोडेड. जो हमारा सपना है संभव का, आपका सपना साकार करे, ये संभव के अंदर डाली गई है. संभव प्रोग्राम में जो रजिस्टर करेगा उसी को ये मिलेगा, ठीक है? संभव इज अ जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम विच यू आर रनिंग फॉर यू गाइज. आप जाइए संभव पे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को क्लिक कीजिए. लिस्ट ऑफ कंपनीज आर ऑलरेडी अपलोडेड हियर फॉर यू गाइज, ठीक है? लिस्ट ऑफ कंपनीज आर ऑलरेडी अपलोडेड फॉर यू गाइज फॉर अ संभव प्रोग्राम, ठीक है? संभव प्रोग्राम में आप जाइए, वहां पे आपको ये लिस्ट ऑफ कंपनीज मिल जाएगी. बस डाउनलोडेबल नहीं है, आप देख के देखिए, इसको टाइम स्पेंड कीजिए. दैट इज व्हाट इज देयर. सेकंड, कुछ लोग बोल रहे थे सर आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग का क्लास भी बता दो, तो वो अपस्किल में जाके लाइव फाइनेंशियल मॉडलिंग में क्लिक करोगे, फिर यू विल बी एबल टू गेट अ फाइनेंशियल मॉडलिंग का क्लास. डिटेल करिकुलम है, अभी रिसेंट बैच चल रहा है, चाहिए तो आ जाओ. कल से थर्ड क्लास है हमारा, यू कैन जॉइन इट आउट. नेक्स्ट अपकमिंग बैचेस आएगा आई थिंक 15 अगस्त के आसपास. विल अपडेट यू ऑन द डेट्स एज वेल. रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, स्टार्ट करिए देखना. एटलीस्ट यू इज गोना बी हेल्पिंग आउट टू क्रैक the interviews out and also going to be helping you to prepare some of the basic financial models as well.
सर कहाँ पे? अपस्किल में जाके लाइव फाइनेंशियल मॉडलिंग में जाइए, रजिस्टर कर लीजिए। रिकॉर्डिंग डली हुई है, अगली क्लास 15 अगस्त के आसपास आएगी, विल अपडेट यू कब से लाइव क्लास आ रही है नेक्स्ट। ठीक है सर, लिस्ट कहाँ मिलेगी? संभव के अंदर। सर संभव का लिंक कहाँ मिलेगा बेटा? टेलीग्राम पे है, और ऑल्सो आई विल शेयर यू ओवर अ चैट बॉक्स। ठीक है, संभव में जो रजिस्टर करेगा उसको वहां पे मिल जाएगा द लिस्ट ऑफ कंपनीज व्हिच आर देयर, राइट। एक सेकंड में आपको चैट पे भी डाल देता हूं जो लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, ताकि आपको वो लिस्ट मिल जाए। ऐप पे भी मिल जाएगा क्या? हाँ बेटा, ऐप पे भी मिल जाएगा आपको, कोई बात नहीं है। हाँ कोई बात नहीं है, ओके, गॉट इट, गॉट इट। यस, मैंने चैट पे भी शेयर कर दिया है, यूट्यूब लाइव वालों के लिए भी चैट पे शेयर कर दिया है, तो आप भी इसको देख सकते हैं। मैंने पिन कर दिया है चैट पे, मैंने चैट पे इसको पिन कर देता हूं। ठीक है, गॉट इट। यस, नाउ टू समराइज द डिस्कशन, फर्स्ट, अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जानना है, व्हाट आई नीड टू डू नाउ। ठीक है, अदर्स प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन सो दैट वी कैन हैव अ डिटेल डिस्कशन। और कुछ लोग जो छुप के बैठे हैं, यार आपको दुनिया माफ नहीं करेगी, भगवान देख रहे हैं ऊपर से। ठीक है, यस प्लीज 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 वीडियोस ऑन कर लो यार, ऐसा ना करो। ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग, those who want to get into IB, first important thing which you need to work on is your skills. Second important thing which you need to work is finding a right references. Third, start applying. Okay. Fourth, after this is done, very very important, you need to know and you should be aware of how to capitalize the things over LinkedIn. Matlab, trust me, I will show you 100 of the posts which are there by written by directors, CFOs, AVP, VP for hiring a right candidates. But the issue comes is कि भाई मैं उनको जानता ही नहीं हूँ, मैंने ऐसी कंपनी के बारे में रिसर्च किया ही नहीं है, CA फाइनल के कोर्स में ही नहीं था। Yes, that is there, that is for sure, है ना। But you need to do and start researching about this because ये सब जो कंपनीज है ना, IB फर्म्स, इक्विटी रिसर्च फर्म्स, M&As, राइट, वैल्यूएशन फर्म्स, ये सब आपको कैंपस में भी नहीं दिखेगी। इनकी वैकेंसीज आपको लिंक्डइन पे कोई डालते हुए भी नहीं दिखेगा। जैसे बिग फोर की आपको दिखती है ना, क्या दिखती है, लिंक्डइन कभी खोलना, वी आर हायरिंग फॉर दिस कंपनी, राइट, ऐसे दिखती है, बिकॉज वहां पे रेफरल बोनस चलता है। आप समझिए, यहाँ पे कोई रेफरल बोनस वगैरह नहीं है इतना यार, यहाँ पे पीपल वांट अ राइट कैंडिडेट विद द राइट माइंडसेट, दैट इज व्हाट इज देयर, एंड दैट इज व्हाई हियर यू नीड टू फाइंड आउट द गुड रेफरेंसेस व्हिच और हु कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सर व्हाट इज माय ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एंड व्हाट इज द एग्जिट अपॉर्चुनिटीज। सर यहां तो मैं आ गया सर, आईबी में काम चालू कर दिया, इसके बाद मजा नहीं आया तो यू कैन मूव टू एफडीडी साइड, यू कैन मूव टू वैल्यूएशन साइड, यू कैन मूव टू एमएनए साइड, व्हिच इज देयर। बट एक बार ये लेडर में चले जाओगे ना, तो आप फिर सोचोगे कि यार चलो अब मैं बैक ऑफिस से चालू किया तो फ्रंट ऑफिस में जाओ, या मिडिल ऑफिस में जाओ, मिडिल ऑफिस से चालू किया तो फ्रंट ऑफिस में जाओ, व्हिच इज डेफिनेटली देयर। ओके, नेक्स्ट, सर ये तो हो गया एग्जिट अपॉर्चुनिटीज। पैसे की बात करो ना सर, पैसा कितना मिलेगा सर फ्रेशर को, हाउ मच मनी आई विल गेट एज अ फ्रेशर। ओके, now there are two types of IB firms, in fact three types of IB firm, but generally I divided it into two, right। तीसरे में मैं डिवाइड नहीं करूंगा बिकॉज अभी तीसरे में डिवाइड करूंगा तो पीपल विल स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, है ना, थोड़ा सा उनको कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। जनरली we divide into the top IB firms and a boutique firms, top IB firms and a boutique firms, okay। There are also called as the firms which are going to be having a bulge bracket firms, but उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूं, मैं उसमें जाऊंगा तो आधे लोग बेचारे फीफो हो जाएगा उनका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो बल्ज ब्रैकेट फर्म्स में अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट लेट मी ओनली जस्ट पुट इट आउट एज अ टॉप IB फर्म्स एंड अ बुटीक फर्म्स। Okay, now a lot of firms which are there which are known as a boutique firms, which means that these are the small IB firms who have started their own investing, or top notch companies के leaders have started their own IB firms। ठीक है, जैसे कि I was a VAVP or I was a director at Goldman, I decided to start my own IB फॉर्म, ठीक है, तो आई स्टार्टेड बाय ओन, तो मैं बुटीक फॉर्म बन गया। ओके, नाउ इनिशियली समटाइम्स यू माइट फील डिफिकल्ट टू गेट इनटू द टॉप IB फर्म्स, लाइक, है ना सर, एक बार टॉप IB फर्म्स के नाम बता दोगे तो मजा आ जाएगा सर। ठीक है, टॉप IB फर्म्स के इफ यू वांट टू राइट डाउन द नेम्स, यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन द नेम्स। JP मॉर्गन, लिखते जाओ फटाफट, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, HSBC होल्डिंग्स, गोल्डमैन सैक्स, HSBC होल्डिंग, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, Barclays, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank, Wells Fargo। मर्क्यूरी में एक बार हायरिंग चेक करना, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हायरिंग करता है वो IB के लिए हर बार,
ठीक है, इस बार भी हायरिंग कर रहा होगा, तो आपको फटाफट मिल जाएगा वहां से, एटलीस्ट कॉल आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, मर्क्यूरी से आपको हायरिंग के चांसेस आने के ज्यादा है, थोड़ा सा वहां पे हायरिंग ज्यादा होता है। नाउ बुटीक फर्म्स में मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने लिस्ट ऑफ शेयर किया है कंपनीज, वहां पे आपको लिस्ट ऑफ बुटीक फर्म्स मिल जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट दिस आर द स्मॉल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स व्हिच यू कैन स्टार्ट योर करियर विद। नाउ दिस टॉप आईबी फर्म्स जिनके मैंने नाम लिखाया है, दे माइट हायर यू ऑन मिडिल ऑफिस, दे माइट हायर यू ऑन अ बैक ऑफिस। ठीक है, बार्कलेस आई टोल्ड यू आउट नॉट, हाँ, तो दे माइट हायर यू एट अ मिडिल ऑफिस, दे माइट हायर यू एट अ बैक ऑफिस। ओके, अब ये डिपेंड करता है हाउ यू आर गुड एट नंबर्स, हाउ यू आर गुड एट प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल मॉडल्स, हाउ यू आर गुड एट प्रोजेक्टिंग द थिंग्स आउट व्हिच इज देयर, दैट इज फॉर श्योर। इसके साथ साथ इट ऑल्सो कम्स विद हाउ यू गिव द इंटरव्यू, बिकॉज मेनी टाइम्स यू विल बी ग्रिल्ड ऑन लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द सेम। ठीक है, तो उस चीज पे भी डिपेंडेंट करेगा। नेक्स्ट, बुटीक फर्म्स रहेंगी, वहां पे यू विल बी आइदर वर्किंग एज अ ऑलराउंडर, है ना, कभी आपको बोलेगा कि भाई तू पीपीटी भी बनाओ, कभी बोलेंगे कि इंटरेक्ट विद क्लाइंट, कभी आपको बोले जाएंगे कि चलो गो टू द क्लाइंट एंड हैव अ पिच प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो दैट इज अ बिट एडवांटेज ऑफ अ बुटीक फर्म्स। अगर मिलता है तो यू कैन गो फॉर इट इफ यू आर वेरी कीन टू गेट इनटू आईबीज। सर बट प्लीज टॉक इन टर्म्स ऑफ मनी सर। ठीक है, टॉप आईबी फर्म्स जो मैंने नाम लिखाया, द पैकेज माइट रेंज फ्रॉम इन अ मिडिल ऑफिस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल ऑफिस, might range from 12 to 15 odd lakhs plus your variable. Now यहाँ पे variable might go up to 100-200% also, might, I'm not saying will, might. ठीक है, तो which is there. अगर small boutique firms है तो it might offer you somewhere around 5 to again 5 to 10 odd lakh, which is there, which is a fixed portion, but the variable portion might again go to up to 200% because it's purely depending on how you're bringing the clients and closing the deals out at the end of the day. ठीक है, बिकॉज ये वेरिएबल मार्केट है, फिक्स मार्केट नहीं है, आप समझो, दिस इज अ वेरिएबल मार्केट, है ना। आईबी साइड थोड़ा सा वेरिएबल मार्केट हो जाता है, दैट इज व्हाई यहाँ पे है ना हायरिंग इज बिट लो बिकॉज इट्स अगेन अ वेरिएबल मार्केट, बिकॉज एट अ टाइम आई विल नॉट बी वर्किंग ऑन मल्टीपल डील्स, मतलब एट अ टाइम आई कैन वर्क ऑन मल्टीपल डील्स, राइट, बिकॉज एक डील क्लोज हुई इसको बहुत टाइम लगेगा, है ना, तो अगेन आई कैन वर्क ऑन साइमल्टेनियस ऑन मल्टीपल डील्स व्हिच आर देयर। नेक्स्ट, ये तो हो गया सर। सर इसके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशंस, yes, the different type of questions will be purely depending on most of the things which will be depending on your model side जो आपने models बनाए हैं, or on a valuation side, or based on your understanding about some of the topics related to SFM which is there। ठीक है, तो ये साइड पे आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। Got it? हाँ, और क्या बचा? एनीथिंग आई फॉरगॉट टू कवर दिस आउट, लेट मी चेक। मैंने बता दिया है फॉर्म्स में हो गया, बल्क ब्रैकेट फॉर्म्स तो अभी नहीं बता रहा हूं मैं। फ्यू ऑफ द इंडियन बैंक्स, एक और चीज बता रहा हूं, फ्यू ऑफ द इंडियन बैंक्स व्हिच मोस्टली गोना बी हायरिंग फॉर आईबी साइड, यू कैन जस्ट राइट डाउन द नेम्स इफ यू वांट टू, व्हिच इज कोटक, कोटक एएमसी, और कोटक बहुत हायरिंग कर लेता है इसके लिए कभी कभी। एक्सिस कैपिटल का हायरिंग चल रहा है, जिन्हें लिंक्डइन अच्छे से यूज करते आता होगा तो इजीली फाइंड इट आउट, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू यूज अ लिंक्डइन। ठीक है, which is there. एम्बिट कैपिटल, एम्बिट कैपिटल भी हायरिंग कर रहा है, एम्बिट कैपिटल का बहुत हायरिंग चल रहा है अभी, तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट ओवर दिस, which is there. Which all company again? Next is, okay, let me remember. ठीक है, I think 3-4 companies which are there, again you will be able to find some of the companies out there. ठीक है, now very important here, one more important skill which is going to be helping you out is sending out the cold emails also. ठीक है, cold emails with sending a financial model which is going to be helping you out to get into this, and cold emails to AVP, VP and director, cold emails to AVP, VP and director. ठीक है, तो उनको you can send a cold emails with attaching your financial models and the projection reports which you have made. So that is what is there. Sir, but sending a cold email, I didn't get a reply. It's like revolving around the dark circle. ठीक है, जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, है ना, सभी इसको रिलेट कर पाएंगे। कभी किसी के घर पे लाइट गई है रात को अंधेरे में, कभी किसी के घर पे लाइट गई है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस? यू जस्ट राइट यस इन अ चैट बॉक्स। किस किस के घर पे रात को लाइट गई है यार? जस्ट राइट यस इन अ चैट बॉक्स प्लीज। हाउ मेनी ऑफ यू, किसी किसके घर पे लाइट गई है रात को, ऐसा अंधेरा हो जाता है पूरा? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस और सीन दिस सिचुएशन और बीन इन दिस सिचुएशन? खाली 25 लोगों के घर पे लाइट गई है, शर्म आ रही है तुमको? लिखो भाई चैट पे। ओके, गॉट इट। नाउ एवरीवन हैव सीन दिस सिचुएशन। जैसे अब लाइट जाती है तो आप लोग क्या करते हो? इमेजिन आपके पास फोन नहीं है आसपास, व्हाट डू? यू रोम अराउंड, थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे जाते हो, 1-2 बार टकराते हो कहीं पे, राइट?
आप इसे हाथ से देखते हो कि हाँ आगे दरवाजा है कि दीवार है, राइट राइट, ना यू ट्राई टू इमेजिन कि हाँ यहाँ से दरवाजा होगा, बट आप गलती से चले गए और टकरा गए, राइट. सो यू डू व्हाट, यू डू ट्रायल एंड एरर, एंड फाइनली यू व्हाट फाइंड अ डोर. There might be chances that you can send there are chances that you might send a mail to 15 odd people, no one will reply. There are chances that आपने 15 कदम बढ़ाए बट आपने गलत जगह बढ़ाए, ठीक है. But you need to continuously hunt around. Say for example, if you're revolving around the same room for 1 hour, you'll at least find an exit कि कहाँ से exit होना है. In a similar way, if you want to find into and get into good IB firms, again you need to find out some of the good references which is there. You need to find out the right people whom to approach, and you need to send also cold emails. Okay. राइट. तो दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर. ये चीज आपको समझना पड़ेगा. अगर आप बंद रूम में हो और आपको बाहर निकलना है तो आप इसे एक्सपेरिमेंट करते हो ना, ट्रायल एरर. एक कदम बड़ा गलत चला, दूसरा कदम बड़ा नहीं गया, राइट. तो देयर आर चांसेस दैट पीपल माइट नॉट रिप्लाई यू बिकॉज दे आल्सो हैव सम अदर वर्क्स इन देयर लाइफ, एंड दैट इज व्हाई somewhat you also need to start some of the writing a cold emails to the VP, AVP and directors. The list of companies have been already shared with you. ठीक है. अभी मत बोलना कि सर नहीं पता. There are two type of people in this earth. जिनको हर टाइम बोलेंगे कि सर स्पून फीडिंग दे दो. स्पून फीडिंग नहीं होती स्टेज में. भाई सीए बन गए आप, ठीक है. वी कैन हेल्प यू आउट टू द लेवल वेयर कि हाँ भाई यहां से मेरे को पता है मेरे को आगे कैसे बढ़ना है. आई होप आई हैव डन दिस. हाउ मेनी फील लाइक कि मैंने अभी तक यहाँ तक आपको पहुंचा दिया. मुझे पता है कि ठीक है सर, हाउ आई विल बी एबल टू डू दिस आउट. हाउ मेनी फील दिस. लिख दो यार. इफ यू फील दिस राइट, जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स. मैंने इस लेवल पे लाके छोड़ दिया कि हाँ भाई चलो अब मेरे को पता है किस कंपनीज में अप्रोच करना है, किसको अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है, ठीक है. इसके आगे क्या चाहिए. अब समझने लगे सर अब रेफरेंस भी लाके दे ही दो, 20% ले लेना सैलरी का, ठीक है, राइट. अभी उस सिचुएशन में नहीं आए हैं, है ना. तो दैट इज व्हाट इज देयर. ओके, सम डाउट्स. गॉट इट. Sir, let's open the forum for a doubts. Before that, is someone saying, sir, how can we make a practical for financial model? मानसी ज्वाइन करो, फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लास चल रहा है हमारा. आइए फाइनेंशियल मॉडलिंग में लाइव इंडस्ट्री का फाइनेंशियल मॉडल हम बनाएंगे. डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है क्लास की, आपको मेल पे भी आ जाएगी आफ्टर द सेशन, और यू कैन गो टू sambav.com अपस्किल्स लाइव क्लास ज्वाइन कर लो. सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी बताइए कुछ आईबी रिलेटेड स्कोप. वेरी गुड, आप पूछ रहे हो, अच्छा लगा मुझे देख के. आईबी फर्म्स में ट्राई करो. जेपी मॉर्गन वगैरह कंपनी, ये सब कंपनीज हायर करती है, बट मोस्टली दे आर गोना बी ऑफरिंग योर बैक ऑफिस रोल. बट उसके बाद आपका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मिडिल ऑफिस से होना स्टार्ट हो सकता है इफ यू स्टार्ट योर जॉब विद आईबी फर्म्स, और यू कैन आल्सो स्टार्ट विद द बुटीक फर्म्स व्हिच आर देयर. So that is what is there. Next some of the doubt solving. Yes, doubt solving है. इसके पहले I think a lot of students even don't know that कि सर जो CS related job vacancies हैं, updates हैं, right? There's a telegram group of CMONG, right? तो यहाँ पे हमने एक telegram group बनाया है May 22 के students के लिए. Request you to please join it. Please उसे join कर लो, because जो भी important updates हैं हम वहाँ पे plot करते हैं, ठीक है. तो फटाफट May 22 CA करके आप सर्च करिए टेलीग्राम पे. पूरे डिस्कशन ग्रुप्स डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे. आप चेक करिए, यूट्यूब पे लाइव देख रहे हो तो, ठीक है. डाउट सेशन ओपन करते हैं. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी यूट्यूब से कनेक्टेड है, पहले यूट्यूब वाली जनता के डाउट्स लेते हैं. यार यूट्यूब वाले दोस्त भाइयों, आप लाइक तो प्रेस कर दो यार. इतना आपके लिए डिटेल सेशन में लेके आए हैं, 1 घंटे में पूरा क्रिस्प आपको बता दिए हैं व्हिच इज देयर. कैन वी हैव अ सेपरेट सेशन फॉर एवरीडी एज वेल? यस. सो बिफोर वी गो टू द डाउट सेशन, जस्ट वांटेड टू नो योर फीडबैक कि कैसा लगा आपको सेशन. आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल टू यू गाइस. अरे कुछ तो बोल दीजिए. अगर सेशन हेल्पफुल था तो यू कैन जस्ट राइट हेल्पफुल इन द चैट बॉक्स. विल बी हैप्पी टू रीड दिस आउट, एंड आफ्टर दैट इज डन वी विल बी ओपनिंग अप द सेशन फॉर डाउट सॉल्विंग. बेनिफिशियल था तो लिख दीजिए मजा आ गया, मजा आ भी गयो. कोई कह रहा है सर मजा आ भी गयो, थैंक यू. ओके, वेरी हेल्पफुल. कुछ भारी सीख लिया 1 घंटे में. अभी मैं इसको और डिटेल में लेना चाहता हूं. मैं इस पे 5 घंटे का सेशन ले सकता हूं, बट मुझे नहीं पता कि आप में कैपेबिलिटी है क्या 5 घंटा बैठने की, इतने भारी सेशन सुनने की, ठीक है. तो दैट इज व्हाट इज देयर. कौन आएगा अगर मैं 5 घंटे का सेशन लूंगा तो कौन आएगा बताइए. हाउ मेनी ऑफ यू विल कम इफ आई टेक अ 5 आवर्स का सेशन. हम आएंगे, अच्छा ठीक है. चलो मैं देखता हूँ, आई डू सम एक्सपेरिमेंट. बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे आईबी के रिलेटेड 5 आवर्स. लिख दीजिए. वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यार, ऐसा ना करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है और क्या है. 4 नए लोग जुड़ेंगे हमसे तो हमको भी अच्छा लगेगा, राइट. ओके, गॉट इट. यस, नाउ ओपन द फोरम फॉर अ डाउट सेशन. जिनको डाउट्स है प्लीज डाउट्स डालिए इन अ चैट बॉक्स. फर्स्ट डाउट, इज सीएफए नेसेसरी फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? द आंसर इज नो. बट थोड़ा सा अगर आपको ग्रोथ पोजीशन में, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में थोड़ा फास्ट ग्रो करना है तो सीएफए थोड़ा सा हद तक हेल्प करता है, बट नॉट एज सच. कि कुछ लोगों को लगता है कि सीएफए नहीं किया तो आईबी में नहीं जा सकते. बिल्कुल गलत है,
ठीक है, which is completely wrong notion. मैं एक चीज बोलूंगा, इनिशियल ईयर में 1-2 साल काम कीजिए, सीखिए एंड देन मूव ऑन. One more important thing, if you're going to be hired for a lot of IB positions or equity positions, many a time you'll be offered a role of internship. ये मार्केट में चलता है, ठीक है. So they'll ask you to do an internship for 6 months or 3 months. And after you are being a good intern, they'll ask you to join on a full-time basis. तो ये मत बोलना कि ये मेरे को कैसे बोल दिया इंटर्न के लिए ज्वाइन करो, ठीक है, गुस्से से ना बोलो, ये इंडस्ट्री में ऐसा ही चलता है. राइट. सेकंड क्वेश्चन सर, इज अटेम्प्ट मैटर इन IB फॉर्म्स? देखो, टॉप कंपनीज, टॉप फॉर्म्स में थोड़ा बहुत मैटर करेगा, बिकॉज इट्स अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. पीपल लुक फॉर द बेस्ट माइंड, पीपल विद द नंबर्स हु कैन हैंडल द प्रेशर, ठीक है. तो थोड़ा बहुत रहेगा, बट बुटीक फॉर्म से आप चालू करो, देन मूव टू द लेटर फास्ट विच इज देयर. ओके. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला एक्सपीरियंस मांगते हैं? नहीं, IB का फॉर्म का एक्सपीरियंस नहीं मांगते, जो मैंने स्किल सेट्स बताया वो मांगते हैं, ठीक है. बल्ज ब्रैकेट के बारे में बता दो. देखो, बल्ज ब्रैकेट फॉर्म्स एक ऐसी फॉर्म से, मतलब इट्स लाइक फॉर्म व्हिच इज गोना बी इन्वेस्टिंग ऑन द FS साइड प्लस पब्लिक साइड प्लस प्राइवेट साइड, ठीक है. तो अब मैं इस पर नहीं जाऊंगा, फिर कुछ लोग बोलेंगे सर FS साइड क्या होता है, ठीक है. तो अभी उस साइड में डिस्कशन नहीं ले जाना चाहता, नहीं तो फिर वो बहुत हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है. What are the certificate courses other than financial modeling which are IB looking for? हाँ, तो अभी IB के अलावा, अब financial modeling के अलावा आप कुछ certificates course कर सकते हो, और you can learn some of the tools which is like Capital IQ, Bloomberg, VCCL, Venture Intelligence. ये सब बहुत सारे tools है जो आप सीख सकते हो. अब वो मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगा, फिर और आपको बहुत भारी भारी लगेगा कि सर ये क्या है, बट इट्स नॉट मच रिलेवेंट फॉर यू नाउ. इनिशियल लेवल पे थोड़ा बहुत नंबर्स फोरकास्टिंग कर लिया तो बहुत है ना. तो अदरवाइज इफ यू फील लाइक लर्निंग दिस टूल्स, यू कैन एनी टाइम लर्न दिस टूल्स आउट. Okay, will you be able to switch from boutique firm to the good companies? And later on the answer is yes, Shruti, you can be able to switch it out. If someone is trying to work from home and find a job, what kind of domain should I apply? अयो, ठीक है, ये एक अलग क्वेश्चन है, बट जो मिल जाए वर्क फ्रॉम होम के लिए वो अप्लाई कर सकते हो. Few startups have started giving the work from home. Swiggy का परसों ही आया था कि they have given 100% work from home, ठीक है. तो कुछ startups, few companies you can try for this out. RM knowledge required to some extent, yes. Type of risk के बारे में थोड़ा बहुत knowledge होना चाहिए, which is there. I want a role in investment banking firm for raise a capital for IPOs and FPOs. What is the best course for the action? आयुष, अभी के लिए तो आपको initially you can start with financial models, which is there. इसके अलावा आप 2-3 और courses कर सकते हो later on, which I mentioned this out. कुछ एनालिटिकल टूल्स सीखो, और धीरे धीरे जब आप लेडर में ग्रो करोगे, ऑटोमेटिकली कंपनी इज गोना बी इंश्योरिंग दैट यू आर गोना बी हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ द सेम, ठीक है. फ्यू डाउट्स फ्रॉम यूट्यूब लाइव की जनता, आपसे डाउट्स ले रहे हैं, तो आप फटाफट डाउट्स डालिए यार चैट बॉक्स पे. आप ही के डाउट्स ले रहे हैं हम लोग अब. ओके. 5 हर्ष गुप्ता जी कह रहे हैं कि यार 5 आवर सेशन विल बी ऑसम. हर्ष भाई, आपके लिए 5 घंटे का सेशन मैं पक्का लूंगा, बट आप अगर आना पड़ेगा, सपरिवार आना पड़ेगा आपको. सर, इफ आई क्लियर द CA plus CFA नहीं हुए, पास ऑल लेवल्स विद 0 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो क्या चांसेस है IB में जाने के? एक्सपीरियंस को तो ठीक है, दे आल्सो अंडरस्टैंड फ्रेशर्स को एक्सपीरियंस नहीं है, बट एटलीस्ट दे विल सी योर स्किल सेट व्हिच आई मेंशनड दिस आउट. Okay, how to acquire skills that are got shortlisted? नहीं समझा गोविंद, फिर से एक बार लिख दीजिए. How to acquire the skills so that our CV get shortlisted? तो गोविंद, इसमें बहुत सारी चीजें हैं. How you make your CV, how you present your CVs, जिसके लिए हमारा एक अलग से ट्रेनिंग वर्कशॉप रन होता है by the name of Getting Interview Ready. उसमें हम ये सब स्किल्स पे आपको सिखाते हैं. वेबसाइट पे जाइए, Getting Interview Ready का बैच 8 अगस्त से चालू हो रहा है, वो भी आप देख लीजिए. सर, आई वांट टू गेट इनटू IB बट अभी नहीं मिला है, टू वे शुड आई अप्लाई? मैंने, देखो ऋषभ भाई, आपके लिए लिस्ट ऑफ कंपनीज कलेक्ट कर दिया. संभव है भाई, संभव है, आप टेंशन ना लो. राइट. CFA और FRM दोनों आपको टू सम एक्सटेंट हेल्प करेगा, बट ठीक है, अभी आप CE के बेसिस पे अप्लाई कीजिए, बाद में अगर लगेगा तो यू कैन स्टार्ट डूइंग द सेम. सर, YouTube वालों का भी सॉल्व करिए क्वेश्चन. अच्छा, बोलिए आपका क्या क्वेश्चन है? सर, आई एम अ BCom स्टूडेंट, कैन आई गेट इनटू इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जॉब? आई एम हैविंग अ NISM 15 सर्टिफिकेट्स. जा सकते हो. अब इसमें आपको है कि आपको इनिशियली रिसर्च पोजीशन मिल सकती है, बट अगेन यू नीड टू क्रैक द इंटरव्यूज आउट व्हिच इज देयर, स्टार्ट अप्रोचिंग द राइट कंपनीज व्हिच आर देयर. वन मोर गुड न्यूज, आई थिंक आनंद राठी is again exclusive hiring partner with us, which is in a SAMBHAV program. तो वो भी काफी सारे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया है. I think 150 plus candidates have been shortlisted for an interview now, so they must be getting an email soon. Okay, sir, can you arrange the 5 hour session on investment banking? बिल्कुल सर, करेंगे. Python skills beneficial रहेगा to some extent, yes, but which is there. Yes sir, very knowledgeable session. Thanks Ashi. Okay.
नेक्स्ट सर, सीए क्लियर होने पर सीए प्लस सीएफए पास ऑल द लेवल से तो बता दिया मैंने। ओके ओके, एनी डाउट्स, एनी कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड? अभी तो इनिशियल लेवल पे सच नॉट रिक्वायर्ड। डू फ्रेशर्स गेट इनटू द फ्रंट ऑफिस रोल बाय चांस? लास्ट टाइम कैंपस में डॉक्टर बैंक आई थी 2 वैकेंसीज के साथ, दोनों सीएम के स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए थे उधर, मजा आ गया था मेरे को। होता है, बट अगेन वहां पे यू नीड टू क्रैक द इंटरव्यूज इन वेरी वेरी गुड मैनर। ठीक है, अब जैसे आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको दे सकता हूँ, है ना। अभी 1-2 क्वेश्चन में पूछूंगा तो, बट वही है कि पीपल स्टार्ट फीलिंग यार ये तो फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, बिकॉज थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए ना यार, विच इज देयर like types of valuation models. Okay, when do you use a IRR, when do you use a DCF, which is there, है ना। तो मतलब ये सब चीजों का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन एंड डिस्कशन ऑन द सेम। ठीक है, इक्विटी रिसर्च का भी एक अलग से सेशन लेंगे, डोंट वरी। ओके, गॉट इट। माय फ्रेंड इज इन अ बुटीक फर्म हैविंग अ ऑफिस फ्रंट ऑफिस जॉब, विल इट बी हेल्पफुल फॉर मी? अगेन आप आपके फ्रेंड से कनेक्ट कीजिए, काम समझिए क्या करता है, उसके बाद यू कैन डिसाइड दिस आउट। मेनी अ टाइम्स यू विल फील लाइक आईबी फर्म का जॉब इज अ सेल्स जॉब। ठीक है, मेनी टाइम्स बिकॉज यू नीड टू गेट द क्लाइंट्स एंड पिच टू द क्लाइंट्स। वही तो है, डील को कन्वर्ट करवाना है भाई, वही तो है। दैट इज समटाइम्स यू विल फील दैट की दैट इज समथिंग व्हिच इज देयर। अनुज, व्हाट आर द स्किल सेट्स रिक्वायर्ड फॉर आईबी? अनुज थोड़ा सा वीडियो को पीछे 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 सरकाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है, संभव से जिनको कॉल नहीं आया आप टेंशन ना लीजिए यार, ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार फॉर्म भर दिया और एकदम से कॉल आ जाएगा। उसमें बहुत सारी स्क्रीनिंग प्रोसेसेस रहती है, कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है, आपका स्किल सेट देखा जाता है, हमारे को कंपनी से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो इट्स नॉट दैट इजी फॉर अस आल्सो, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, राइट। आप सोचिए भाई, हम इतना एफर्ट ले रहे हैं आप सभी के लिए कि एक सपना है कि आप सभी को प्लेस कर दें आपकी ड्रीम जॉब पे। ठीक है, तो दैट इज समथिंग, अ विजन व्हिच वी आर कैरिंग एंड ट्राइंग टू एंश्योर दैट यू गेट क्लोजर टू योर ड्रीम कंपनीज। आप ये हल्ला मत कीजिए कि संभव से जॉब नहीं है, आप बाकी जगह से भी करिए अप्लाई। हम 100% कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स से टिल नाउ आई थिंक वी हैव कॉल्ड मोर देन 3000 कैंडिडेट्स आउट। ठीक है, 3000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को कॉल आ चुके हैं, एंड इनमें से आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 500-600 का इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज द नंबर्स व्हिच वी आर वर्किंग नाउअडेज। डोंट वरी, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। ओनली द थिंग व्हिच यू नीड टू बी इज कंसिस्टेंट फॉर योर प्रिपरेशंस आउट, दैट्स इट। Okay, last 2-3 questions, right? Major certifications, example Power BI to focus on entry into data analytics. Yes, Power BI आपको help करेगा DA side जाने के लिए। Sir, were you ever interested in investment banking? I mean, initially, yes, since I've been working into a lot of this side है ना, तो अभी मैं IB side थोड़ा सा move हो रहा हूँ, तो that is something which is there, है ना। तो since I'm running my startup, तो मुझे काफी ज्यादा valuations और ये सब चीजों में डील करना पड़ता है, तो that is what is always there. Okay, got it. Getting into a stocks in a Goldman, what to do? एक बार कीर्ति आप इसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, है ना, अगर चाहिए तो मुझे एक बार भेज देना टेलीग्राम पे, I'll happy to read this out. Sir, for start, should we go into Big 4 or IB? It's purely depending on your area of interest. It's purely depending on your area of interest. Okay. Can anyone can do in industrial training in IB firms? हर्ष भाई बिल्कुल कर सकते हो आप industrial training investment banking firms में, lot of investment banking firms which are there which offer a training. ऑल्सो एमबीबी फॉर्म्स में सिर्फ अभी तक के, तो जहां तक मुझे पता है बीसीजी हायरिंग करती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, तो आप लक्ष्य उनके पेज पे टारगेट करते रहे, आपको हेल्प आउट हो जाएगा। ओके सर, समवन इज आस्किंग एनी कूपन कोड फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लास? अभी तो नहीं है, आप ले लीजिए यार, वैसे डिस्काउंटेड प्राइस पे है, लाइव क्लास है, मजा आएगा, और क्या चाहिए आपको। ओके ओके, गॉट इट। तो ग्रेट, आई थिंक वी ट्राई टू कवर ऑल द मेजर पॉइंट्स, मेजर क्वेश्चंस आउट व्हिच इज देयर रिलेटेड टू द सेशन। And I hope if you have enjoyed the session, तो लिख दो ना यार feedback, enjoyed the session, लिख दीजिए। If you have enjoyed the session, you can just write it over a chat box. We'll be happy to read the feedback over the chat box, please. Got it. If you have enjoyed the session, लिख दीजिए सर, हमें भी थोड़ा सा मजा आ जाएगा, पढ़ के खुशी हो जाएगी, हम भी थोड़ा सा हंस लेंगे यार, ऐसा ना करिए, राइट। आप लोग आए, अच्छा लगा, राइट। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप पीपल हैव एंजॉयड द सेशन। थैंक यू गाइस, बाय बाय। जस्ट लेट मी नो, कल हमारे और इवेंट्स होने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, अपकमिंग डेज पे बहुत सारे इवेंट्स हैं। mentorship.cmonk.com पे जाइए और रजिस्टर कर लीजिए फॉर द अपकमिंग इवेंट्स। कल हमारा इवेंट है फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन। कल हमारा इवेंट है स्टैट्यूटरी ऑडिट डोमेन, और आप सभी का एक फेवरेट इवेंट भी हम प्लान कर रहे हैं, हाउ टू गेट अ फॉरेन जॉब्स। जल्दी आने वाला है, हाउ टू गेट अ फॉरेन जॉब्स। वो सपना अब दूर नहीं, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑडिट का इवेंट है, कल ज्वाइन कर लीजिए। फिर रैंकर्स के लिए एक सेशन प्लान कर रहे हैं, नेटवर्किंग इवेंट, ये जरूर आइएगा, सब परिवार नए दोस्त बना के जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स है जो हम प्लान कर रहे हैं। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू, सी यू सून, थैंक यू गाइस।